हेलो, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हलीम और आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मोल रेशो इन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. It is actually a quantitative relationship between the amount of reactants and products in a balanced chemical equation is called stoichiometry. So there are fundamental assumptions for stoichiometric calculations. So number one is the reaction should be completed in forward direction. रिएक्शन हमेशा आगे जाए और पूरी तरह मुकम्मल कंप्लीट हो। और उसके अलावा दोस्तों ये कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ख़ास प्रोडक्ट बनाएं, मतलब साइड रिएक्शन ना हो। अगर हम एग्जांपल रहें कार्बन और ऑक्सीजन के लिहाज से कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन की तादाद कम हो गई तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। तो हमें ये रोकना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ना बना सके। उसके अलावा मास के लिहाज से सेम होने चाहिए, मास शुड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के सेम होने चाहिए, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो भी होना चाहिए। और ये सारे चीज़ें हैं जो मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट्स कितने अमाउंट बनेंगे और वाइस वर्सा। तो ये बेसिकली स्टोइकोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। स्टोइकियन मीन्स एलिमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट और पार्ट, एलिमेंट और पार्ट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो देर आर different types of stoichiometric relationship. The first one is mass relationship we can. तो मोल रेशियो मीन्स रिएक्टेंट्स के मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे कि वेट दिया हुआ है हर एक का, तो हम उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट के भी जो बनेंगे उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का मालूम कर सकते हैं कितने चाहिए, कितनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट चाहिए, कितनी प्रोडक्ट मिलेगी। तो बेसिकली मोल रेशियो मीन्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मतलब रिएक्टेंट्स के कितने मोल दिए हुए हैं और उसके बाद प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड मोल रेशियो. So the mole ratio between the reactants and product can be shown as 1 mole of propane react with the 5 moles of oxygen to give 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. So the amount of propane used will not affect these ratios. The equation is now balanced and therefore the amount or the propane that is used does not affect the quantity of product. So this is the mole ratio in stoichiometric relationship. The other thing is that we can also calculate the mass relationship. Either we can calculate mole, because from masses we can calculate the mole, or from mole we can calculate the masses of reactants as well as the products. In this equation, like propane, 1 mole of propane is required to burn with 5 mole of oxygen, and 3 mole of carbon dioxide is formed. In addition, 4 moles of water is also produced, and also the energy is also released. So the energy is not given here, but because it is organic reagent and it possesses internal energy, so the reaction is burning, combustion reaction, so it is also produce lot of heat in this type of reactions. So this is the example of mole ratios or mass relationship. The other example of the mole ratio, mole stoichiometric calculation are the
molar volume. So we know that 1 mole of any gas at STP, standard temperature and pressure, occupies a volume of 22.414 dm cube per liters. So this volume is called molar volume. So with the help of this relationship, we can convert the mass of a gas at STP into its volume and vice versa. Hence we can say molar volume of gas is also related with their density at STP. Because we know that from general gas equation we know that PV is equal to nRT, and N is the number of moles, and mole is equal to given mass upon molar mass, and by volume is multiplied with the pressure, but on the left side then it will divide with the volume, mass with volume. So mass will volume, that will convert it into density. So density will be equal to Pm upon RT. It means the 1 mole of volume of any gas at STP occupies a volume of 22.414 dm cube. This volume is called molar volume. So for example, as we consider the 22.414 dm cube of any gas STP is equal to 1 mole, then the particles or molecule of that will be equal to Avogadro number, and that is equal to 6.02 into 10 to the power 23 molecules. On the other hand, 22.414 dm cube of hydrogen gas at STP is equal to 2 gram, is equal to 6.02 into 10 to the power 23 molecules. So if we know that hydrogen H2 2 gram is equal to 1 mole, so that contains molecules of Avogadro number. And on the other hand, ammonia is also 1 mole of ammonia also contains at STP also contains 22.41 dm cube, and also the number of molecules will be same, like 6.02 into 10 to the power 23, and the mass will be different because the molecular mass of ammonia is 17 AMU. So if we convert this express this AMU into gram, then we will obtain the mole of the ammonia. So mole contains 6.02 into 10 to the power 23 molecules. So these molecules are very fixed number of molecules of different gases at STP, and also the volume of these gases is also fixed at STP. So this is said to be the molar volume. So there are other relationship like mass volume relationship. We can calculate the mass and volume of reactants and products, or vice versa. So this is another example for. And on the other end, there is also an example, law of combining of volume. So gases react in a simple whole numbers by their volume. So this is called Gay-Lussac law, and this is very important for the volume relationship. So I hope that you understand all these things, and if you have any question regarding this, so feel free to contact me on my YouTube comments box, or you can directly email me, and you can also follow me on Twitter, and you can like my Facebook page. So if you like my video, then you subscribe my video and share with other friends. Thank you very much for watching.